In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Prophet Muhammad said, the best ibadat in my ummah is the recitation of Holy Quran. Now today, I will deliver another lecture for class 10th, unit production, and today's topic is pollination. आज हम pollination के बारे में पढ़ेंगे. Pollination. How can I define pollination? Pollination क्या हो? Transfer of pollen grains. Transfer of pollen grains from anther to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. Is called pollination. The agents which bring about pollination are called pollinators. Pollinators, for example, honeybees, birds, etc. Okay. Pollination क्या हो? तो इस पर रात में तो इस पर रात में तो pollen grain का अच्छा मना मैं वो रात ovule क्या हो? इसे pollen grain चाहता इस पर नियरन anther मन तो ये pollen grain चो non motile आसन immobile आसन तो वहीं चो pollination के जरिए वातन ये pollinating agent के जरिए वातन चाहिए female parts यानी कि stigma निश Is on carpellus per tip pass and that is called stigma. Otanchi watan. You see transfer go pollen grain from anther to stigma as process of pollination. Okay. My sodium agent is pollination in role karanche, pollinators. For example, honeybees, birds, and baki animals, wind, water, they are pollinating agents. So my sawal is pollination chair. Each is a type. Pollination. Pollination is of two types. Aap kaisa go self-pollination. There go cross-pollination. Self-pollination. Cross-pollination. Self-pollination and cross-pollination. Now, what is self-pollination? Self-pollination kya ho? It is the transfer of pollen grains. Transfer of pollen grains from anther to stigma of same flowers or different flowers of same plant. As far as self-pollination go your pollen grain gets transfer from anther to stigma of same flowers. Okay. That's what in exi flowers months gets any transfer pollen grain stigma and pollen grain from anther to stigma. As far as exi portions months legacy. So a self-pollination young as different flowers of same plant. Yeah, exi plant is different flowers. Teman darmiyan tiyas transfer gets pollen grain on month. That's the man self-pollination. Okay. My sawal is self-pollination is less common. It is less common. It is less common pollination. It occurs in bisexual flowers. Bisexual flower.
It occurs in bisexual flowers. Okay. Yani yimdan bisexual flower chasan. Meun yawai bisexual flower kya go? Ego su flower yasman male the female part as exipocious man. That's one of bisexual flower. Temni mas self pollination. Why sorry self pollination isn't she? Each come seeds can produce. It produces few seeds. Yani I'm such a common seed ban. The back point like it produces weaker seeds. Yani I'm such a seed to near. I'm pollination के जरिए हम बेल नेरन छो. Tim चे weak आसन. Tim चे less viable आसन. Tim चे weak आसन. Tim यासा ये seeds. Okay. So this is self-pollination. My सवाल ये self-pollination छे. आज further type. Self-pollination. Self-pollination is further type. Self-pollination is a further two types. Self-pollination. Self-pollination is further type. Ago autogamy. Autogamy. Bago jitnogamy. Autogamy क्या हो? Autogamy को it is the transfer of pollen grains. It is the transfer of pollen grains from anther to stigma of same flowers. मैं वन वही ये गसन between the same flowers या between the different flowers of same plant. यदि गस between the same flowers तो तथ किस्म pollination पे नाउ autogamy. Okay. ब्यागो जितनोगेमी. जितनोगेमी क्या हो? जितनोगेमी लिखो इस. It is the transfer of pollen grains from anther to stigma of different flowers मगर of same plant. Different flowers of same plant. Okay. Go self-pollination to further the type. Ago autogamy, bago jitnogamy. Autogamy क्या हो? Transfer of pollen grains from anther to stigma of same flowers. Okay. तो autogamy. Auto means self. Bago jitnogamy. Yes, but pollen grain gets transferred from anther to stigma of different flowers of same plant. In execules pet yum मुख्तलिफ पोश छे यदि तिमन दरमियान pollination गसे तब jitnogamy. The bago go between the same flowers is gसे the तथ वनो अस यानी कि एक्सी पोशस मंस तथ वनो अस गई autogamy. Okay. So this is self pollination. You go off type. Back type one of us. So cross pollination. Number next. Cross pollination. Cross pollination. Yaach back now is xenogamy. Cross pollination क्या हो? It is the transfer of pollen grains from anther of one plant to the stigma of anther of one plant to the stigma of another plant. Now cross pollination. Cross pollination go ये anther ये pollen grain gets transfer. यैसे ये आगे कुल पेड़ 20 कुल इस्ता है. चाहे
यानी अकिस कुलिस पे फ्लावर तम पे एंथर तम के एंथर पे नेर पोलन ग्रीन सह गई बीस पोश के स्टिग्मास पे ट्रांसफर तथ वन क्रॉस पॉलिनेशन ओके या वन जीनोगेमी ओके वो सवाल इस क्रॉस पॉलिनेशन चूंकि अतन जरूरी जरूरत कम सुन पॉलिनेटर सुंद ट्रांसफर कर बीस कुलिस पे वात गो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट या अम पे वो बी पॉइंट यह गो क्रॉस पॉलिनेशन ब्या पॉइंट लिखो इट इज मोर कॉमन यह ज्यादा कॉमन क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा गसन कुलन मज तो इट प्रोड्यूसेस मनी सीड्स अम सीड्स नेर ओके ब्या पॉइंट लिखो इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग वायबल सीड्स अम स्ट्रॉन्ग सीड्स नेर वायबल सीड्स नेर तो ब्या पॉइंट लिखो it occurs in both unisexual and bisexual flowers. Okay. Go cross pollination क्या हो? Cross pollination will transfer gas pollen grain from the anther of one plant to the stigma of another plant. Okay. ओके तो अस वो क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी यह ज्यादा कॉमन ज्यादा कुल कर क्रॉस पॉलिनेशन अम क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए मतलब वारिया सीड्स नेर तम सारी सीड्स बड़ स्ट्रॉन्ग सीड्स वायबल सीड्स यह ज्यादा पहम यूनिसेक्चुअल फ्लावरन मज वो कैचन बाइसेक्चुअल फ्लावरन मज लबन क्रॉस पॉलिनेशन ओके सो these pointers help you in differentiating it from self-pollination. मुझे सवाल on the basis of pollinating agent cross pollination has further types. Cross pollination has further type on the basis of pollinating agent. Yes, further types. Entomophily. Entomophily. Gago anemophily, Gago hydrophily, Gago ornithophily, Gago zoophily. Okay, all these are the types of cross pollination. Let us take these one by one. Gode was entomophily. Entomophily is in shape. Entomophily ishkaran kaam. It occurs by insects. Yes, much pollinating agent as an insect. It occurs by insects. Yom insect carry pollination. Entomophily, for example, honeybees shat mazivan. Honeybees, wasps, moths, butterflies, beetles, etc. Mostly 80% plants in pollination by this method, entomophily. Yani insect karan 80% यहाँ से प्लांट पॉलिनेशन ओके इंसेक्टों में खास कर होनी बी बेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट होनी बी ओके गो लिहाजा कह याद एंटीमोफिली गो सो पॉलिनेशन यस इंसेक्ट्स करन पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन तथ मज होनी बीज वास्पस मॉथस बटरफ्लाइज बीटल्स लगभग 80% प्लांट्स तम यमन जन pollination गसन by insects. ब्या किस्म दोयम तथ वन एनिमोफिली. Anemophily it occurs by wind. Yes, wind के जरिए pollination गस wind. तब anemophily
फॉर एग्जाम्पल यह गसान मेजस मज, यह डेटस मज गसान, खजर कुलिस मज, तो पाइनजन मज, याड़ कुलन मज, याड़ कुलन मज गसान विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, तक विंड कर पॉलिनेशन, तक मेल पार्ट, सह मेल कुन अकिस ब्रांच पे, फीमेल कुन बीस ब्रांच पे, पे विंड तो विंड कर ट्रांसफर पोलन ग्रेन, तो तथ वो एनिमोफिली। ओके गई जो कस्म। तो नंबर नेक्स्ट ब्या टाइप तथ हेड्रोफिली, 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 हेड्रोफिली एज द नेम इंडिकेट्स इट occurs by water। इस वाटर के जरिए पॉलिनेशन गई, वाटर कर पॉलिनेशन सह गो हेड्रोफिली। फॉर एग्जाम्पल लोटस, लोटस प्लांटस मज वाटर लिलियस मज इन लोटस मज वाटर लिली इन मज हेड्रोफिली, इन मज वाटर कर यह सा यह पॉलिनेशन। ओके तो नंबर नेक्स्ट ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ornithophilia, ornithophilia as the name indicates, it occurs by birds, by birds। यह bird करे pollination, तब ornithophilia, ornithophilia। okay यह bird करे pollination, so ornithophilia। for example cotton, cotton plant cotton plant by sunbird, sunbird कर पॉलिनेशन, या ह्यूमिंग बर्ड कर पॉलिनेशन, ह्यूमिंग बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड या सनबर्ड यह कर कॉटन प्लांटस मज पॉलिनेशन। गो यह बर्डो के जरिए गसान ऑर्निथोफिली। ओके तो नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज ज़ूफिली, 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 लास्ट टाइप ज़ूफिली, ज़ूफिली, ज़ूफिली क्या it occurs by, as the name indicates, by animals। यह एनिमलों के जरिए गसान, लाइक यह कर लिजार्ड्स, लिजार्ड स्कैरल कर, स्कैरल कर, स्नेल कर, यम कर यह पॉलिनेशन ज़ूफिली। हैव यू अंडरस्टूड? शाबाश, तह थो याद। On the basis of pollinating agent, यानी ये कुछ करन pollination, कुछ ट्रांसफर करन ये pollen grain from one plant to another plant। ये pollinator आसन, pollinating agent आसन। For example, insect छु तफना entomophily, wind छु करन तफना anemophily, तो water छु करन सको hydrophily, bird छु करन सको ornithophily, तो animal छु करन सको zoophily। Okay, so these are the types of cross pollination। So finally, significance of pollination, significance of pollination। pollination क्या है significance, अमिश क्या importance, अच्छे importance गोड़े यह मेल गेमेट या फीमेल गेमेट दोनवे नॉन मोटाइल, इमोबाइल, तो इन वातान फर्टिलाइजेशन साइट पे कस पॉलिनेशन। लिखो मेल एंड फीमेल गेमेट्स और नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, दे आर कैरिड to fertilization by pollination। यानी pollination के जरिए वातान यम fertilization साइट पे। तो because of pollination अगर वो pollen grain द्राव, pollen grain किर फायदे 20 कुलिस तान, यह पाना नॉन मोटाइल, गो यम pollinator निवन, pollinating agent तुलन, तो वातान 20 प्लांट्स तान या 20 फ्लावर्स तान। So it is because of pollination they are carried to fertilization site। Number 2 क्या सचो ये pollination अम के जरिए हेकान प्योर लाइन्स बनाए, तो या
desired varieties hekan chu wobdavit. It can be manipulated to produce pure lines by self-pollination and desired varieties by cross-pollination. Desired varieties by cross-pollination. Okay. But yemi se pure lines hasil karan. Yuzan pure line shasan. Yani ki yuzan pet plant ais. Öş at karan kam, öş at self-pollination karan. Bontu se sui plant neran yus hera ais. Choice parent ais. Timich neran offspring ste. So pure line. Beag with desired varieties, öş nine varieties banavan. High yielding varieties banavan. Öşüşen plantan mans, öşüşen zontes mans, öşüşen bakyan ya da fruitan mans, öşüşen variya nine varieties banayes. High yielding varieties. Im jahan paydawar devan çe. Timay banavna by the process of cross pollination. Tim get desired varieties. Chati go ishteli gasan yel pollination jigasan. Chati go isha image importance. Okay. So this was my today's lecture about pollination from Matrix Standard. Now, tomorrow we shall take it as another question, that is fertilization in plants. Yani when both ye male gamete female gamete, yani female gamete ch eti male mitranus anther ego pollen green go when stigmas nish both ye. I can fertilization gasan ms plantas mans. That part we shall study tomorrow. Okay.